afternoon, my dear students. How are you? I hope so you all are fine and enjoying the videos, also doing the studying part and doing practical at home also, the same activity what we are doing in the class. So today, before starting our lecture, let's recite a shloka. So all of you join your hands, close your eyes and let's start the shloka. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah. All of you open your eyes, put down your hands. Yes. So let's come back to our today's topic. Before that we will do little bit conversation. Okay. So earlier I taught you about the concept of he and she. So once again we will revise the same topic. Some of the students, they had sent me beautiful videos of the concept he and she. So I appreciate all of them, those who had sent the videos, and I request the other students also to do the activity practically at home so that it can be set in your mind. Okay, so let's revise once again. Let's revise. So he, H-E, he we always use with the man. Okay, and she we always use with the boys and with the women. Okay, like if you want to introduce your brother, your father, your grandfather, what you will say? He is my brother. He is my father. He is my grandfather. At the same time, if you want to introduce your grandmother, your mother, your aunt, your sister, so how you will introduce them? She is my sister. She is my grandmother. She is my mother. She is my aunt. And I am your teacher. I am also female. So for me also you can say she is my teacher. Okay. She is my mathematics teacher. So for male that means पापा अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं मेल. उनके साथ लगता है HE he और फीमेल के साथ लगता है SHE she. तो आपको एक बार फिर से मैंने रिवाइज करवाया है. आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको उनको कैसे बोलना है. दूसरी चीज है, जब आप किसी एनिमल के बारे में बोलते हैं तो उनके साथ हम कभी भी ही और शी नहीं लगाते हैं. वी यूज इट, IT, इट, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी सेज, यू से 5 सेंटेंस अबाउट डॉग. सो डॉग इज अ पेट एनिमल. पेट मतलब जिनको हम टैम करते हैं, मतलब पालते हैं, है ना. हम लोग डॉग को पालते हैं ना घर पे. कुछ लोग उनको अपने घर में रखते हैं क्योंकि वो डेंजरस नहीं होते हैं. पेट एनिमल्स होते हैं. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में. जैसे लायन है, एलिफेंट है, ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. लेकिन पेट एनिमल्स को हम घर में टैम कर सकते हैं. टैम मीन्स पाल सकते हैं. तो डॉग, जैसे आपको 5 सेंटेंस डॉग के ऊपर बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे कि डॉग इज अ पेट एनिमल. अब उसके आगे बोलना है. आपको बार बार जरूरी नहीं है कि डॉग बोलना है और हम उनके साथ में ही और शी भी नहीं लगाएंगे. ठीक है, हम बोलेंगे डॉग इज अ पेट एनिमल. इट हैज 4 legs. क्या यूज करेंगे? IT, इट. क्या यूज करेंगे? IT, इट. इट हैज 4 legs. It has 2 ears. Okay, it has 1 tail. So like this you can introduce about the, you can say the topic about any animal. For animal don't use he or she, always use IT, it. आया आपको आज का समझ में? he और she किसके साथ यूज करना है? आज मैंने आपको नई चीज बताई. IT, it किसके साथ यूज करना है ना. he यूज होगा मेल के साथ. मेल मतलब बॉय, मैन जो होते हैं उनके साथ में. she यूज होगा फीमेल के साथ में, जैसे मम्मा है, आंटी है, ग्रैंडमदर, उनके साथ में. और IT, इट यूज होगा एनिमल्स के साथ में. तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एनिमल्स पे कोई टॉपिक बोलते हैं तो आपको ये नहीं बताना है कि he has 4 legs. he का यूज नहीं करना है. IT, इट का यूज करना है कि it has 4 legs, it has 2 ears, it has 2 eyes, it has 1 tail. Okay, so like this you can introduce or you can say the topic for animals. So use IT, it. So it's clear to you. Now come back to our mathematics topic. So I had already taught you numbers till 1
30, 30, 1 to 30, 30. So in the series of 21 to 30, we had already done the after numbers. Today we will do before numbers of the same series and between numbers of the same series. So take out your mathematics notebook, your pencil box, and write today's date and write the heading with me, okay? W, say and write so that you can read the heading also. WHAT, what? What comes? COMES, what comes? Just, JUST, just before. BEFORE. बेटा आप लोग जब इंग्लिश में ई बनाते हैं, कुछ बच्चों का फॉर्मेशन ई बनाने में भी गलत होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक बार देखिए। कुछ बच्चे ई ऐसे बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं। ये दोनों फॉर्मेशन आपके रॉन्ग है ई बनाने के, स्मॉल ई बनाने के। आपको हमेशा पहले स्लिपिंग लाइन बनाना है, देन डू लाइक दिस। दिस इज प्रॉपर ई। सो मेक लाइक दिस। सी, मैंने भी ऐसा बनाया है ना, आपको ऐसे बनाना है। पहले स्लिपिंग लाइन, वंस अगेन सी स्लिपिंग लाइन, आपको स्लिपिंग लाइन बनाना है, देन उसी पे बिना हाथ उठाए कर्व बनाना है। सो दिस इज प्रॉपर ई। सो डोंट मेक लाइक दिस ई, ओके? Okay, now after that put number 1 here. You already have this type of blocks in your notebook. Okay, so before का meaning क्या होता है मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। Before means पहले, before means पहले, पहले क्या आया। जैसे somebody enters before you in the room, so what you will say? He or she entered before me, मतलब ये मेरे से पहले रूम में आया या आई। अगर कोई गर्ल आती है तो आप क्या बोलेंगे? She entered in the room before me. अगर कोई बॉय आएगा तो आप क्या बोलेंगे? He entered the room before me. Before मतलब पहले, before मतलब पहले, okay? So now we will write before numbers. So in first block you have to put like this blank, then write here 7. आपका 7 भी proper होना चाहिए. Sometimes you make like this 7. This is wrong. Okay? आपका 7 बिल्कुल proper होना चाहिए. Slipping line and then slanting line. Don't make like this. ये 7 नहीं होता है. This is wrong. This line should be always slanting. तो slanting line आपको बनाना है. Okay? Slipping line and slanting line. So this is called 7. So what comes before 7? Just think. What comes before 7? When you write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then at that time what you write before 7? You write 6. Okay? Number 2. I am adding all the numbers here so that once again you can revise the number, and we will do that series also. What I told you that from 21 to 30, that numbers also we can include here. But today we will do the numbers that we had already done earlier also, so it can be revised once again. Okay? Here number 9 dash. So what comes before number 9? Just think it. What you write before number 9? 9 से पहले आप काउंटिंग में क्या लिखते हैं? You always write number 8. Number 8 always comes before number 9. So here we will write number 8. Now number 3. Number 11, 1, 1, 11. What comes just before 11?
When you write the line from 1 to 10, so 10 is the last number in that series, and after that we start 11. So before 11 what we write? 1, 0, 10. So here dash, and in that you have to fill up the number 1, and 0 always should be in oval shape. Don't make 0 like this. This is circle. This is not 0. 0 always should be in oval shape. Okay, number 4. Here dash 1, 4, 14, 4 भी आपको प्रॉपर बनाना है. Slanting line, sweeping line, then standing line. 1, 4, 14. It is not 40. 40 जब हम बोलेंगे तब लगता है 40. बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं बोलने में. जब वो 13, 14 बोलते हैं तो 30, 40, 50, 60 बोलते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है. जब आप 0 लगाते हैं किसी नंबर के पीछे तब वो बनता है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. लेकिन जब हम 1 लगाते हैं यहाँ पहले, बिफोर लगाते हैं किसी नंबर के पहले, तो वो टीन होता है. जैसे 14. 14. So before 14 we always write 1, 3, 13. Now complete this. Okay, now number 5. I am going to write here number 5. Here dash, and here I am going to write 16. So think before writing what comes before 1, 6, 16. When you write the numbers from 11 to 20, in that numbers what you write before 1, 6, 16. 6 के पहले क्या आता है? 5. 6 के पहले क्या आता है? 5. तो 1, 6 के पहले क्या आ जाएगा? 1, 5, 15. So write here 1, 5, 15. Now number 6. Here I am going to write 18, and here you have to fill up the place. What comes before 1, 8? 18. 8 से पहले आप think करिए. 8 से पहले आप क्या लिखते हैं? 7. क्या लिखते हैं? 7. तो 1, 8 से पहले हमको क्या लिखना है? 1, 7. क्योंकि 7 के बाद 8 आता है, तो here we will write 1 before. Okay, then we will write 7. Okay, now number 7. 2, 0, 20. 2, 0, 20. अब देखो मैंने यहाँ 0 लगाया तो 20 बोला है, 20 नहीं बोला है. 10 कब लगता है? जब बिफोर में 1 आ जाता है. ये देखिए जहाँ पे 1 आया वहाँ पे 10 बोलते हैं, लेकिन जैसे ही 0 आफ्टर लग जाता है किसी नंबर के, वो TY हो जाता है. तो ये हो गया 20. 20 नहीं हुआ, क्या हो गया? 20. So before 20 we write 1, 9, 19. Now number 8. 21. So before 21 what comes? 2, 0, 20.
have no space. If I will write that side, you are not able to look it. So I am going to erase this side. If you have space on the same page, you can also write on the same page. If you don't have space on the same page, you can turn the page and take out your new page and write number 9 in that new page. Okay? Write here number 9. Here my number is 24. 24. My new number is 24. So what you write before 24? Before 4 we always write 3. So 23. What comes here? 23. Now number 10. Here blank space, here I had written 26. So before 26, before 6 we always write 5. So before 26 we write 25. 2, 5, 25. Number 11, 28. What you write before 8? We always write 7. Before 8, we always write 7. So here we will write 20 to 7, 27. Number 12. 3, 0, 30. 3, 0, 30. We will not say 13. ये होता है 1, 3, 13 और 3, 0 होता है 30. ओके, जब भी बेटा 0 बाद में आ जाता है किसी नंबर के आफ्टर नंबर हम 0 लगाते हैं वो टी वाई में चेंज होता है 30. फिर हम टीन नहीं लगाते 30. सो बिफोर 30 वी राइट 2, 9, 29. So we had completed before numbers till 1, 2, 3, 0, 30 and we had completed the numbers also till 3, 0, 30. Now it's time to know about the between numbers. Between numbers मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ 1 से लगाकर 20 तक के डिजिट्स के. उसमें between का मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया था. between मतलब बीच में, है ना. If you want to sit in between of the two students, what you will ask? May I sit in between you? May I sit in between you? अगर आपको उनके बीच में खड़े होना है तो आप क्या बोलते हैं? May I stand in between you? May I stand in between you? तो between का मतलब होता है बीच में. Now we will do the numbers. What comes in between? I think you had completed till this. Now take out your new page and write new heading. What comes in between? INAC here. What? WHAT. What you have to say and write. जब आप बोलेंगे आपको
रीडिंग करते हुए आएगा। WHAT वॉट, वॉट मतलब क्या। COMES comes, क्या आता है, comes in between, BETWEEN, what comes in between, between मतलब बीच में। अब हम देखेंगे बीच में कौन से नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। सो राइट हेडिंग, now write here number 1. You have this type of blocks in your mathematics notebook. So now what we have to write? We have to write in between numbers. So we will give blank here. Between मतलब बीच में हम जगह खाली रखेंगे। अब हम शुरू की डिजिट से एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं नंबर्स यहाँ पे लिखूंगी। 3 गैप 5। क्या आता है 3 और 5 के बीच में? जब आप काउंटिंग लिखते हो, आप काउंटिंग बोलो 3, after 3 what you say? 4, then 5. So which number is missing here? Number 4. So we ask number 4 to sit in between 3 and number 5. Now number 2, 6, here blank, and here number 8. Now we have written 6 and 8. Now which number is missing here? Now say counting from 6, because we have written number 6. 6, after 6 what comes? 7, then 8. So between number is number 7. Number 3, number 10, blank here, here 1 to 12. So 10 and 12 they are sitting on the place. One number is missing from here, so we had find out that missing number and we ask that number to sit in between 10 and 12. So what number is that which is missing? Number 11. 11 comes just after 1 0 10 and it comes in between 10 and 12. So 1 1 11. Now number 4, 1 5 15, here gap, here 1 7 17. So what comes in between 15 and 17? 15, after 15 16. So which number is missing? 16. So we will write here 1 6 16. Now after that, number 5 I am going to write here. 1 8 18, gap, and then 2 0 20. So what comes in between 18 and 20? 1 9
Here I am going to write 23. Blank here. 25. So in between 23 and 25, which number comes? 24. 2, 4, 24. Number 7. 26. Blank here. 28. What comes in between 26 and 28? 27. After that, number 8. 28. Here dash. Here 30, 30. So what comes in between 28 and 30, 30? 29. Complete this. So today beta we had completed the numbers till 3030. In that series we had already completed after numbers in our previous video. Today we had covered the topic that what comes just before and what comes just in between. So we had completed till 3030. So now it's your turn to revise the things again and again and do it practically, do it in your rough copy, and it should be set in your mind that which digits come before, which digits come after, and which digits comes in between. So now it's your turn. Till then, bye bye. Have a nice day.